This scripture portion has taken from Jeremiah 37 verse 17. I will focus on the whole Jeremiah 37 chapter, but specially I am going to read the verse Jeremiah 37:17. And the Bible says, Then King Zedekiah sent for him and had him brought to the palace, where he asked him privately, Is there any word from the Lord? Yes, Jeremiah replied, You will be handed over to the king of Babylon. मेरे लिए परमेश्वर से कुछ खबर, कुछ संदेशा है? तब जेरेमिया ने कहा, हाँ है। मैं आज का इस वचन को आप लोगों के लिए लेना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का मैसेज हमारे लिए है। एक्सक्यूज मी। परमेश्वर का जो वचन, परमेश्वर का जो संदेश हमारे लिए है। थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। जेरेमिया का चैप्टर 37, जब आप उसको 1 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे, आप जेरेमिया का बारे में जानने पाएंगे कि जेरेमिया को प्रिजन में या जेल में रखा गया था। जब आप जेरेमिया चैप्टर 37 1 से लेकर पढ़ेंगे, तब जेरेमिया एक जेल में उसको रखा गया था। और जेल में इसीलिए रखा गया था कि जब जेदेकिया ने, राजा जेदेकिया ने इजिप्ट का सैनिक के साथ, इजिप्ट का राजा का साथ जो हाथ मिला के बेबीलोन राजा का विरुद्ध में जो लड़ाई करने के लिए मन बनाया था, उस समय परमेश्वर ने जेरेमिया को कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। আপুনি এনেকে কৰিব নালাগে। সিদিকিয়া ৰজাক ক'লে, কিয়নো সিদিকিয়া ৰজাই ইজিপ্তৰ যে ৰজাৰ লগত হাত মিলাই বেবিলনৰ ৰজাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে। আৰু ঈশ্বৰে প্ৰফেচি দিলে জেৰেমিয়াক যে কৈ দিয়া যে এনেকে কৰিব নহয়, বেবিলনৰ ৰজাই তোমাক ধৰিব, আক্ৰমণ কৰিব, তোমাক ধৰিব, বন্দী বনাব। কিন্তু সেই বাক্য শুনি, ঈশ্বৰৰ প্ৰফেচি শুনি জেৰেমিয়াক বন্দী বনাই ৰাখি দিলে। জেৰেমিয়াক বন্দী বনাই ৰাখি দিলে প্ৰফেচি কৰাৰ কাৰণে। আৰু যেতিয়া জেৰেমিয়াক বন্দী বনাই ৰাখি দিয়াৰ পিছত কিন্তু সিদিকিয়া ৰজাই আকৌ জেৰেমিয়াক বন্দীশালৰ পৰা লৈ আনে, মাতি আনে আৰু সোধে, মোৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ কিবা কথা আছে নেকি, খবৰ আছে নেকি? মোৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ কিবা খবৰ আছে নেকি? मैं आज आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, ऐसा बहुत सा व्यक्ति लोग है, जब प्रार्थना करने के लिए वो लोग रिक्वेस्ट देते हैं, प्रार्थना कर दीजिए मेरे लिए, और बाद में पूछते हैं परमेश्वर ने कुछ दिखाया क्या, परमेश्वर ने कुछ विजन दिया क्या, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ बताया क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पहले परमेश्वर का आज्ञाओं को मानिए। जेदेकिया राजा ने परमेश्वर का आज्ञाओं का नहीं माना, उसने लड़ाई मत करो और तुम इजिप्ट का राजा का साथ हाथ मत मिलाओ, क्योंकि इजिप्ट का मतलब हो गया हम लोग इजिप्ट को हम लोग छोड़ के आ रहा है। इजिप्ट में इतना गंदगी था, इजिप्ट में इतना दासत्व था, बंदित्व था, उसमें से हम लोग निकाल के आए हैं। फिर से जब इजिप्ट का राजा का साथ हाथ मिलाने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने कहा जुदा, लेकिन हिजकिय्याह राजा ने फिर से उसका हाथ मिलाया। आज हम लोग परमेश्वर का आज्ञाओं को मानते नहीं हैं, आज हम लोग परमेश्वर का वचन को मानते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पूछते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर से क्या है,
कुछ खबर है क्या, कुछ रेवलेशन है क्या, कुछ विजन है क्या, कुछ प्रोफेसी है क्या? पहले आप परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना स्टार्ट कीजिए, परमेश्वर का आज्ञाओं को मानिए, तब परमेश्वर आपके लिए रेवलेशन देगा। यहां हम लोग देखते हैं कि फिर भी राजा ने परमेश्वर का आज्ञाओं का नहीं माना, फिर भी जेरेमिया ने राजा को कहा, यस देयर इज, हाँ है, इज देयर एनी वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड? जेरेमिया ने कहा, यस, हाँ है। अब भी आपके लिए भी परमेश्वर देना चाहता है। करवा है कभी कभी परमेश्वर का रेवलेशन, कभी कभी परमेश्वर का जो प्रोफेसी होता है, परमेश्वर का जो विजन होता है, परमेश्वर का जो भी हम लोग के लिए उसका जो वार्ता होता है, वो क्या होता है? करवा होता है कभी कभी। इसमें कहा, यस ही विल बी हैंडेड ओवर टू द किंग ऑफ बेबीलोन, तुमको बेबीलोन राजा का हाथ में दे दिया जाएगा, समर्पण किया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। बेबीलोन राजा तुमको पकड़ के लेके जाएगा। यही है परमेश्वर का वचन। आज मैंने आप जो नया साल का पहला संडे, मैं एक चैलेंज के साथ, एक प्रत्याह्वान के साथ आपका पास आया हूं। चैलेंज के साथ आप सोचेंगे, मेरे लिए परमेश्वर का कुछ रेवलेशन है, मेरे लिए परमेश्वर का कुछ खबर है, मेरे लिए परमेश्वर का कुछ प्रोफेसी है? मैं कहना चाहता हूं, हाँ है। क्या है? नंबर 1 आज हम लोग उसका देखेंगे। द मैसेज उन लोगों के लिए है जो अभी तक परित्राण मिला नहीं है। आज এই খবৰ বা এক ঈশ্বৰে দিয়া বাৰ্তা তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আনিবৰ কাৰণে বিচাৰিছো। প্ৰথমে যিসকলে এতিয়াও পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই, এতিয়াও সঁচা ৰাস্তাটো জনা নাই, এতিয়াও ঈশ্বৰক চিনি পোৱা নাই। আমোস 4 অধ্যায় 12 পদ, Amos chapter 4 verse 12, the Bible says, prepare to meet thy God. তোমাৰ ঈশ্বৰক লগ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা। আপুনি আৰু আমি আজি নিজৰ ঈশ্বৰক লগ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব কাৰণে লাগে। যিসকলে এতিয়াও পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই, যিসকলে এতিয়াও যীশুক জনা নাই, যিসকলে এতিয়াও যীশুৰ পৰা দূৰত আছে, আজি এই বাক্যই আপোনালোকৰ কাৰণে জনাই আছে যে ঈশ্বৰে এই নতুন বছৰত আপোনাৰ পৰা কি আশা কৰিছে? ঈশ্বৰক লগ পাবলৈ। To meet thy God, আপোনাৰ ঈশ্বৰক লগ পাবৰ কাৰণে, আপোনাৰ ঈশ্বৰৰ লগত যেন আপুনি লগ পাব পাৰে, গৈ পাব পাৰে, তেওঁৰ লগত যেন আপোনাৰ ভাল সম্পৰ্ক হয়, আপুনি যেন আপোনাৰ ঈশ্বৰক চিনি পায়। আজি ঈশ্বৰে আপোনাক ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে। हमारा जीवन तो अनसर्टेन, हम लोग का जो लाइफ है ये हम लोग नहीं जानते। अभी है, अभी थोड़ा देर बाद क्या होगा, अभी है, हमारा थोड़ा देर बाद हम लोग का लाइफ में क्या इंसिडेंट होने वाला है हमें पता नहीं है। जीवन जो है, मृत्यु कब है हमें पता नहीं है। आज आप अखबार को खोलिए, आज आप जो भी न्यूज़ को देखिए कि आज अभी आदमी लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आदमी लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो सही सलामत घर वापस नहीं हो रहा है। एक्सीडेंट में कोई किसी का मौत हो रहा है, किसी का हाथ पैर तोड़ रहा है, किसी का परिवार ही दुनिया को छोड़ के चला गया है। किस लिए? अब क्या होगा आप नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है, अब मैं तुम्हारे लिए वचन भेजा हूं, मैं तुम्हारे लिए आज ये सुबह, आज ये जो मेरा संडे समय में आप तुम्हारे लिए वचन भेजना चाहता हूं कि मन फिलाओ, परमेश्वर का पास आओ, रिपेंट करो। क्योंकि जेम्स चैप्टर 4 and verse 14 the Bible says, whereas you know not what shall be on the morrow, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है तुम्हें पता नहीं है। काली बा পৰহি কি হ'ব তাক তোমালোকে নাজানা। যাকোব 4 অধ্যায় 14 পদত কৈছে, for what is your life, তোমাৰ জীৱন কি হয়? It is even a vapor, এটা ভাপৰ নিচিনা, বায়ুৰ নিচিনা, that appeared for a little time and then vanished away, অকমান সময়ৰ কাৰণে আহিলে, ওলালে আৰু তাৰ পিছত নাইকিয়া হৈ গ'ল। So today God wants you to know him, to repent, to know to your real God, the creator of heaven and earth, the creator of you. You have to know your creator. This morning he wants to say that repent, come to the Lord. Etu aji ishore amak janaise
আজি এতিয়াই এইখিনি সময়ত আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আমাক সময় নালাগে আমাক ভাবিবৰ কাৰণে নহয় যে মই অলপ আনন্দ কৰি লওঁ মই অলপ ঘূৰি লওঁ নতুন বছৰটো পাৰ কৰি লওঁ বা নতুন যিখিনি আমি আনন্দ ফূৰ্তি পাৰ কৰি লওঁ তাৰ পিছত মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহিম চাপিম এটো সময় নহয় বাইবেলত কৈছে লুক চেপ্টাৰ 13 ভাৰ্স 5 Jesus said except ye repent you shall all likewise perish সিলোহ নামৰ জায়গাত যেতিয়া উখ গড় বনাইছিলে ডাঙৰ উখ গড় সেই গড়টো ভাঙি পৰিলে আৰু তাত অনেক মানুহৰ মৃত্যু হ'ল হঠাতে গড়টো ভাঙি পৰাৰ কাৰণে অনেক মানুহ মৃত্যু হ'ল প্ৰভু যীশুৱে কৈছে যে তেওঁলোকে পাপী বুলি যে মৃত্যু হ'ল এনেকুৱা নহয় কিন্তু যদি তোমালোকে মন পালটন নকৰা সময় থাকোতে যদি তোমাৰ ঈশ্বৰক চিন নোপোৱা তেতিয়া হলে কি হ'ব তোমালোকৰ বিপদ হ'ব মৃত্যু হ'ব দুখ হ'ব আৰু অনন্ত জুই তোমালোকৰ কাৰণে আছে আজি আপোনাক ঈশ্বৰে আমাক ক'ব কাৰণে কৈছে repent today the first thing I want to say repent what is the meaning of repent আমি যদি repent শব্দটো অৰ্থ চাওঁ change of our thinking আমাৰ মনৰ ভাৱনা set mindset change কৰি আমি হসাটোক সত্যটোক গ্ৰহণ কৰা সোৱা মোৰ পূৰ্বপুৰুষে কি কৰি আছে বা মই কেনেকে মোৰ আগৰ চলি আহিছে নহয় হসাটো চাবৰ কাৰণে সত্যটো জানিবৰ কাৰণে মোৰ এটো আদতেই হয় মোৰ এটো অভ্যাসেই হয় মই এনেকে চলিবই লাগে নহয় হসাটো কি আছে তাক জানিবৰ কাৰণে কিয়নো ঈশ্বৰে আজি আপোনাক কবৰ কাৰণে বিচাৰিছে যে তোমাৰ কাৰণে বাক্য আছে আন এটা কথা আমাক জনাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে Jesus is coming soon অতি সোনকালে যিশু আমাৰ ওচৰলৈ আহি আছে second time দ্বিতীয়বাৰ যীশু খ্ৰীষ্ট আমাৰ জীৱনলৈ আহি আছে আপুনি আৰু আমি যদি জগত নাথাকো তেতিয়া হলে আমাৰ সেই দিনটো যি সময় যীশু আহিব সেই দিনটোত আমি যীশুৰ লগত বা তেওঁৰ লগত আমি যাব নোৱাৰিম সেই কাৰণে আমি এই যেটো আমাৰ ধৰ্মগীতৰ আমি এতে গীত গাওঁ এই ধৰ্মগীতৰ গীতটোত কি কৈ আছে আয়ুষৰ দিন বেগাই যায় পাতৰ দৰে সৰি যায় যীশুৰ ওচৰ আহে এতিয়া অন্তিম কাল হ'ব যেতিয়া প্ৰভুক আৰু নাপাব যীশুৰ ওচৰ আহে এতিয়া সময় যীশুত বিশ্বাস কৰাৰ সময় এতিয়া স্বৰ্গৰ দুৱাৰ বন্ধ হলে নেমেলিব প্ৰভুৱে যীশুত বিশ্বাস কৰাহে এতিয়া সময় বেগাই গৈ আছে আগমন দিন আহিছে যীশুৰ আশ্ৰয় লোৱাহি এতিয়া মৰণৰ দিন আহিলে নাপাবা উদ্ধাৰ পাছে বেগাই আহা যীশুলৈ এতিয়া সময় যীশুত বিশ্বাস কৰাৰ সময় এতিয়া স্বৰ্গৰ দুৱাৰ বন্ধ হলে নেমেলিব প্ৰভুৱে যীশুত বিশ্বাস কৰাহে এতিয়া Is there any word from God? Is there any word from God to me? For me? Yes, there is word for you. যেদেকিয়া কাৰণে ঈশ্বৰে কথালে যে তোমাক বেবিলনৰ ৰজাই ধৰি লৈ যাব There is always word for them who seeks who want to hear from God. ঈশ্বৰৰ পৰা সদায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বাক্য থাকে যিসকলে ঈশ্বৰৰ পৰা শুনিবৰ কাৰণে বিচাৰে যদি আপুনি শুনিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে
যদি আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা ৰেভেলেশ্যন পাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে তেনেহলে আজি তেওঁলোকক ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে যিসকলে এতিয়াও পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই। দ্বিতীয়তে আজি ঈশ্বৰৰ পৰা বাক্য তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে যিসকলে আজি বেকস্লাইড হৈ গৈছে, ঈশ্বৰৰ ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি গুচি গৈছে, সত্যৰ পৰা বহুত দূৰ গুচি গ'ল। তেওঁলোকৰ কাৰণে ঈশ্বৰে আজি বাক্য দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। জেৰেমিয়া chapter 3 verse 22 বাইবেলত কৈছে, ৰিটাৰ্ণ ইয়ে বেকস্লাইডিং চিলড্ৰেন এণ্ড আই উইল হিল ইয়ৰ বেকস্লাইডিং। বেকস্লাইড হোৱা বুলি ক'লে ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, হেৰাই যোৱা, সঁচা ৰাস্তাত জানিও সত্য ৰাস্তা চিনিও তাৰ পৰা আঁতৰি নিজৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা নিজৰ খুচি মৰ্জিত চলা, তাকে বেকস্লাইডেড হৈ যোৱা, আঁতৰি যোৱা। বহুত মানুহে গীৰ্জাঘৰলৈ যায়, বহুত মানুহে ফেলোশ্বিপো এটেণ্ড কৰে, বহুত মানুহে ফাষ্টিঙো লয়, বহুত মানুহে বাইবেলো পঢ়ে, কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে যে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ৰাস্তাৰ পৰা বহুত দূৰত গুচি গৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ হিব্ৰু চেপ্টাৰত কৈছে যে শুনা কথাত অধিককৈ মন দিব লাগে। আমি जितु कथा सुनिसो जो हम सुन रहा है उसमें हम लोग ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर का पास से या परमेश्वर का जो करीब से हम लोग दूर हम चला न गया हो, हम दूर चला ना गया हो, इसीलिए हम लोग ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं, जो लोग परमेश्वर का सही रास्ता को जानते हुए भी परमेश्वर का रास्ता पे नहीं चल रहा है, खुशी मर्जी अपना मन मर्जी चल रहा है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बैकस्लाइडेड लोग ये भूल जाते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं परमेश्वर का वचन के द्वारा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है और कहने के लिए कहा है कि तुम बताओ उन बैकस्लाइडेड लोगों के लिए, तुम बताओ उन जो अपना रास्ता से भटक चुका है उन लोगों को तुम बताओ। ये परमेश्वर ने मुझे बताया है आज, इसलिए उस वचन को मैंने लेके आया हूं। परमेश्वर का रास्ता से भटकने वाला, बैकस्लाइडेड होने वाला लोग ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर को जानने का पहले वो कैसा था उसका हालत। ईश्वरक जनार আগতে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল তেওঁলোকে পাহৰি যায়, যিসকল আজি সত্যৰ পৰা বিমুখ হৈ গৈছে, সত্যৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। আজি তেওঁলোকক ঈশ্বৰে ক'ব কাৰণে বিচাৰিছে, তোমালোকৰ পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ চোৱা। तुम अपने पहला जिस अवस्था में था, हालत में था, उसको तुम एक बार देखो। तुम भूल चुके हो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें, परमेश्वर ने कहा है, मैंने तुम्हें आशीष किया, मैंने तुम्हें जानने दिया, मैंने तुम्हें मेरे पास बुलाया, मैंने तुम्हें आशीष करके एक अच्छा व्यक्ति बनाया। फिर आज तुम मुझे भूल के तुम अपने स्वार्थ के लिए अपने इच्छा से चल रहे हो। जो बैकस्लाइडेड लोग ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बचाया, इट इज गॉड हु सेव्ड मी, परमेश्वर ने मुझे बचाया, ये वो लोग भूल जाते हैं। आज मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आप जो रिपेंट हो, मन फिराओ, बैकस्लाइड होके परमेश्वर का रास्ता से बहुत दूर चले गए हो, फिर से आप परमेश्वर का रास्ता पे आओ। परमेश्वर बुला रहा है आपको, अभी भी परमेश्वर आशा करके बैठा हुआ है, जैसे परमेश्वर ने इजराइल लोगों को आशा करके बैठा है कि परमेश्वर इजराइल को ऐसे आशा कर किया था कि तुम मुझे छोड़ के तुम बहुत दूर चले गए हो, तुम मुझे छोड़ के तुम बहुत ही गंदा काम कर चुके हो, फिर भी अपना स्वामी को छोड़ के जलने वाला जो महिला है, वो अपना स्वामी को छोड़ के दूसरा स्वामी पकड़ लेने वाला है, फिर भी मैं आशा करके बैठा हूं कि तुम मेरे पास आओ। हाँ, बैकस्लाइड होने वाला, परमेश्वर से दूर होने वाला व्यक्ति लोग जो है, हम लोग जितना भी परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, हम लोग परमेश्वर जो हम लोग का सच्चा स्वामी है, हम लोग का जो सच्चा परमेश्वर है, उसको छोड़ के हम लोग दुनिया का जितना भी आनंद या जो रंग तमाशा में हम लोग, वही हम लोग का स्वामी बल्कि हम लोग मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं है, वो सच्चा नहीं है। आज परमेश्वर आपको कहता है, हाँ मैं तुम्हें फिर से बुलाना चाहता हूं, फिर मैं तुम्हें मेरे पास बुलाना चाहता हूं, अभी तुम मेरे पास आओ। जेरेमिया में जो अभी चैप्टर 3 वर्स 22 में मैंने अभी पढ़ा आपके लिए, रिटर्न ये बैकस्लाइडिंग चिल्ड्रेन, जी हेराई जुआ
বিপথে পৰিচালিত হোৱা সেই সন্তানবিলাক মন ঘূৰাই ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ আহা। There is word for you in this new year. God wants to talk to you. There is revelation for you. He says to those who already backslided, return to me. Even now God says, you are my children. I love you. That's why I gave my life for you. Come to me. Repent and come to me. মন ঘূৰাই মোৰ ওচৰলৈ আহক। মনত ৰাখিব, এবাৰ যদি আমি ঈশ্বৰক পাওঁ আৰু যদি ঈশ্বৰৰ পৰা আমি আঁতৰি যাওঁ, আকৌ এবাৰ যেতিয়া ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহোঁ, সময়মতে যদি ঘূৰি নাহোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত ডাঙৰ পেমেণ্ট আমি দিব লগা হয়। We have to pay a great amount, a huge amount, if we fail to come in due time, if we fail to return in due time. Remember what happened to these people. Prodigal son, অপব্যয় পুত্ৰই নিজৰ পিতৃৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, পিতৃৰ পৰা তেওঁ দূৰত গুচি গ'ল। পিতৃ আমি মানি লওঁ সেয়া আমাৰ প্ৰভু, আমাৰ পিতৃ ঈশ্বৰ। যেতিয়া তেওঁ পিতৃৰ লগত আছিলে, আনন্দ শান্তি একো অভাৱ নহৈছিলে। কিন্তু যেতিয়া পিতৃৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, তেওঁ কি হৈ ঘূৰি আহিব লগা হ'ল? ভোক, পিয়াহ, অপমান, কি কয় একেবাৰে বস্ত্ৰহীনতা, সকলোবিলাক লৈহে তেওঁ ঈশ্বৰৰ লগত আহিব লগা হ'ল। আজি আপুনি আৰু আমি যিমান ব্যক্তিসকল আমি আছোঁ, যদি এতিয়াও আমি সঁচা সময়ত সঠিক সময়ত ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ মন পালন কৰি নাহোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা হ'ব, we have to pay a great amount to come back to the Lord. বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট দিব লগা আছে, হ'ব পাৰে যদি সময়মতে মন নুঘূৰাওঁ। জোনাৰ জীৱনলৈ আমি যদি চাওঁ, জোনাক ঈশ্বৰে মাতিছিলে, কিন্তু জোনাই ঈশ্বৰৰ পৰা পলাই গ'ল। দ্য আনাদাৰ মিনিং অফ বেকস্লাইডিং। ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল। আৰু কি হ'ল? 3 দিন 3 ৰাতি ডাঙৰ মাছৰ পেটত সোমাই থাকিব লগা হ'ল। আপুনি আৰু আমি আজি ঈশ্বৰে যদি মাতিছে, ঈশ্বৰে যদি আমাক সময় দিছে, আমি তেওঁৰ পৰা যদি আঁতৰি গুচি যাওঁ, সময় থাকোঁতে যদি মন ঘূৰাই আহোঁ, আজি যদি এই আৱাজ শুনি, আজি যদি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি আমি মন ঘূৰাওঁ যে পৃথিৱীৰ ৰং তামাচা যিমানবিলাক আছে এইবিলাক মিছা, আমি এৰি সত্য ঈশ্বৰৰ লগত থকাটোৱে আমাৰ কাৰণে কাম্য, আমাৰ ভাল, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে সময় আজি ভাল। নহ'লে আপুনি ডাঙৰ এমাউণ্ট, ডাঙৰ আপুনি হিচাপ দিব লাগিব ঈশ্বৰক। জোনা 3 দিন 3 ৰাতি মাছৰ পেটত থকা, আপুনি অলপ ভাবি চাওক, মাছৰ পেটত সোমাই থকা, ডাঙৰ মাছৰ পেটত সোমাই থকাটো তেওঁৰ কাৰণে কিমান কষ্ট আছিলে। উশাহ লোৱাটো, তেওঁ হিলাহিলি কৰাটো, তেওঁ মৃত্যু বাচিবনে, তেওঁ এতিয়া মৃত্যু হ'ব, তাৰ অনিশ্চয়তাটো থাকি তেওঁ তেওঁৰ পৰা ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, প্ৰভু এবাৰ হ'লে আপুনি মোক বচাই দিয়ক, আৰু এবাৰ হ'লে আপুনি মোক বচাই দিয়ক। ভাই ভনীসকল, আপুনি আৰু আমি ঈশ্বৰক ঠগো। আপুনি আৰু আমি ঈশ্বৰক বহু সময়ত আমি ঠাট্টা কৰোঁ বা ঈশ্বৰক আমি ঠগো। বাইবেলো আমাক কৈছে তোমালোকে ঈশ্বৰক ঠগোৱা। কিন্তু আজি আপোনাক মই জনাই আছোঁ, সময় থাকোঁতে सही समय पे आप रिपेंट होके प्रभु का पास आ जाओ। जो न्यू ईयर मनाना, जो आप क्रिसमस मनाना, आप परमेश्वर का रीति रिवाज का अंदर में रह के आप प्रभु का साथ में रहे। मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने देखा था किताब में, कैथरीन कुलमैन जो उस समय का जो अच्छा एक प्रचारक थी, उसने जब प्रचार किया था, कैथरीन कुलमैन ने कहा कि एक बहन, वो बहुत विश्वासी थी, हमेशा प्रार्थना में लगा रहती थी। उसका 2 बच्चे, उसका हस्बैंड, हमेशा वो लोग प्रार्थना में लगा रहती थी और परमेश्वर से उनका बात होते थे, परमेश्वर उनसे आके बात करता था उस समय। और एक दिन परमेश्वर ने उसे कहा, मेरा बेटी मैं तुम्हें नर्क दिखाना चाहता हूँ। तो उसने कहा, प्रभु मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ, मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें नर्क का बारे में दिखाना चाहता हूँ। तो उसने एक दिन सो रहा था
और सोने का वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया। जब प्रभु आते हैं, ये जो हम लोग का घर का टीना होता है या कोई शब्द होता है, वो परमेश्वर को रोक नहीं सकता। परमेश्वर स्पिरिट है, होली स्पिरिट, जैसे स्पिरिट, परमेश्वर स्पिरिट है। तो वो सो रही थी, सपना में देखा कि यीशु मसीह घर का ऊपर से आके उसका पास, औरत के पास खड़ा हो गया और बोला चलो। तो दोनों एक दूसरे का साथ करीब रहते, वो लोग वो हवा में चल के बहुत दूर गया। जाने के बाद उन लोग बड़ा बड़ा नली का जैसा, जो ह्यूम पाइप जैसा, उन लोग को कुछ दिखाई दिया। तब उस औरत ने यीशु को पूछा ये क्या है? तो यीशु ने कहा नरक जाने वाला यही सब रास्ता है, यही रास्ता से आदमी लोग नरक जाता है। और मतलब ये कोई ऐसा है गुस्सा करने वाला, कोई होते झगड़ा करने वाला, कोई है कुछ ऐसे, कोई अलग अलग रास्ता से आदमी लोग व्यभिचार करने वाला रास्ता से नरक जाते हैं। तो लोग उसी से एक रास्ता में से यीशु और वो लड़त चला गया। जब वो लोग उसमें अंदर ही जा रहा था, बहुत ही बदबू आ रहा था, जैसे मांस जलाने वाला बदबू आ रहा था, बहुत हुल्लड़ मचा रहा था, बहुत आवाज आ रहा है तो अंदर से। तब वो औरत डर गई और उसने प्रभु का करीब आ गया। तो प्रभु कहा मत डर, ये नरक में ऐसा होता है क्योंकि जो आदमी परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, जो व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर का वचन को नहीं माना, उन लोगों के लिए यही बनाया गया है, उन लोग इसी पे आएगा, इसीलिए नरक में जल रहे, वो लोग चिल्ला रहे। तो ऐसे ही जब देखा आग का कुआं है, आग का कुआं, बहुत सा आग का कुआं में वो लोग जल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। और जब वो लोग, वो आत्मा, जो जलने वाला आत्मा लोग जब देखा यीशु को, यीशु हमें बचाइए, यीशु हमें बचाइए, वो लोग बहुत ही रो रहा है, अफसोस कर रहा है, बचाइए हमें। तो यीशु ने कुछ नहीं बोला। जब यीशु ने कुछ नहीं बोला तो वो आत्मा जितने जो जल रहा था, यीशु को बुरा बुरा वर्ड, बुरी गंदी गाली उन लोग यीशु को दी। तो ये औरत अपना कान को बंद किया, ऐसा गाली हम सुन नहीं सकता, ऐसा गाली दिया। यीशु ने आंसू बहाया और चला गया और चलते जा रहा है। तो ऐसे एक कोई कुआं के किनारे से कुआं के किनारे से जा रहा था, अचानक किसी औरत का आवाज, लड़की का आवाज उस औरत का कान में गिरा, बचाओ मुझे बचाओ। तो ये औरत का प्यार आ गया, तो उसने हाथ बढ़ा के जब उस जो जलने वाला कुआं से किसी औरत को उठाने के लिए गया, तो इसने मना कर दिया मत छुओ उसे, क्योंकि वो जजमेंट हो चुका है, मतलब वो अभी नरक में है, उसको मत छुओ, उसको तुम उठाने नहीं सकोगे। तब इस औरत ने पूछा प्रभु ऐसा क्या इसने गुनाह कर दिया कि ये अभी आग में जल रही है, इसका गुनाह क्या था प्रभु? तब यीशु ने कहा इस औरत का, इस लड़की का जब उम्र था 14 साल 15 साल, उस समय मेरा वचन उनका पास आया था। जैसे प्रभु का वचन, प्रभु का दास मैंने जैसे बता रहा हूं, ऐसे कोई प्रचारक उसको प्रभु का वचन दिया था कि तुम मन फिराओ, प्रभु का पास आओ, क्योंकि प्रभु तुम्हें चाहता है। लेकिन उसने, और लड़की ने कहा मैं तो अभी, मेरा उम्र क्या है, मैं अभी, मेरा उम्र नहीं है, अभी तो मुझे और बहुत जिंदा रहना है, मैं प्रभु का पास आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। फिर जब उसका उम्र 18 साल का 20 साल हो गया, तब फिर प्रभु का वचन उसका पास आया, तेरा जीवन प्रभु को दे दे क्योंकि प्रभु तुम्हें चाहता है। उसने कहा नहीं, अभी तो मैं जवान हुई हूं, मुझे और बहुत आनंद मनाना है, मुझे दुनिया में घूमना है, देखना है, मैं अभी प्रभु को जीवन देने से मैं वो दुनिया का जितना भी रंगीन जो भी नजारा है, जो भी रंगलिया है, मैं उसको मनाने नहीं सकूंगा, इसीलिए मैं अभी प्रभु का पास नहीं जाऊंगा। आज बहुत मानव लगे যিশুৰ ওচৰত আহিব কাৰণে বেয়া পায়, ভয় কৰে, কেলে মই যিশুৰ ওচৰত আহিলে দুনিয়াৰ আনন্দ মই উপভোগ কৰিব নোৱাৰিম। বহুত মানুহ বিলাকে আজি বহুত মানুহ বিলাকে এদৰে ভাৱনা কৰে, খ্ৰীষ্টান বা যিশুৰ ওচৰত আহিলে বা মই প্ৰাৰ্থনা গীৰ্জা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মই কেতিয়াও যিশুৰ কি কয় আনন্দ, পৃথিৱীৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব নোৱাৰিম। আৰু সেই ছোৱালীজনীও দুবাৰ যিশুৰ বাক্য প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে, গ্ৰহণ নকৰিলে, যাৰ কাৰণে তাইক লাহে 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 ধুনীয়া ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল, তাই ধুনীয়া মিছ ইউনিভাৰ্ছ, মিছ ৱৰ্ল্ড হ'ল। আৰু এনে থাকোঁতে পৃথিৱীত ইমানেই ব্যস্ত হৈ গ'ল যে পৃথিৱীৰ ৰং ৰসত ব্যস্ত হ'ল। আৰু এদিন হঠাতেই তেওঁ এক্সিডেণ্ট হ'ল, আৰু যিশুক নজনাৰ কাৰণে সেই তাইৰ প্ৰাণটো শয়তানে লৈ নৰকত লৈ আনিলে, আৰু তাই নৰকত জ্বলি আছে। ভাই ভনীসকল, আজি আমাক ঈশ্বৰে সময় দি আছে। আজি আমি নতুন বছৰ মানাই আছো। বহুত মানুহ এক্সিডেণ্ট হৈ পিনে আজিও মৃত্যুমুখত পৰি আছে, বহুত মানুহ আজি এক্সিডেণ্ট হৈ হস্পিটেলত পৰি আছে। কালি আপোনাৰ আৰু আমাৰ জীৱনত কি হ'ব আমি নাজানো। সেইকাৰণে আজি এই বচনটো, মই এই বাক্যটো আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছো যে
মন ঘূৰাবৰ কাৰণে ৰিপেন্ট হ'বৰ কাৰণে আপুনি আৰু আমি মন ঘূৰাই ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহিবৰ কাৰণে এটো এটা সঠিক সময় দিছে হেকাৰণে বেকস্লাইডিং হৈ যোৱাবিলাক ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱাবিলাক মন ঘূৰাবৰ কাৰণে আমাক ঈশ্বৰে সময় দি আছে যদি আমি আজি এইটো ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি নাহো তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা সময় আহিব যিদিন আমি এদিন আমাৰ মৃত্যু হ'ব বা আমি এই পৃথিৱী এৰি দিব লাগিব সেইখিনি সময়ত আমি যিমান কান্দিলেও যি হলেও ঈশ্বৰৰ ওচৰত যাব নোৱাৰিম কেলে জাজমেন্টটো আমাৰ কাৰণে কি আছে এটো সেট হৈ যাব পলম নকৰা হে পাপী জন খ্ৰীষ্টত আছে তোমাৰ মুক্তি ধন আজি মাতে তেওঁৰ কোমল বচন দিও পৰিত্ৰাণ ধন্য ধন্য নাম প্ৰভু যীশুৰ তেৱে কৰিলে পাপ মোচন মোৰ অনন্ত কাল থাকিম তেওঁৰ লগত সেই পবিত্ৰ ঘৰত প্ৰভুৰে মাত শুনা পাপী গণ আহা ল'ৰাহঁত তেওঁৰ নিমন্ত্ৰণ শীঘ্ৰে আহা হে দুখী জন যীশু কৰা গ্ৰহণ ধন্য ধন্য নাম প্ৰভু যীশুৰ তেৱে কৰিলে পাপ মোচন মোৰ অনন্ত কাল থাকিম তেওঁৰ লগত সেই পবিত্ৰ ঘৰত আজি ঈশ্বৰে সময় দি আছে মাতি আছে প্ৰথমে আমি দেখিবলৈ পালো ঈশ্বৰে আজিলৈকে যিসকলে যীশুক জনা নাই তেওঁলোকক মাতি আছে আজি এইখিনি সময়ত মই তেওঁলোকক মাতি আছে ঈশ্বৰে যিসকলে আজি ঈশ্বৰৰ পৰা হেৰাই গ'ল বেকস্লাইড হৈ গ'ল ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি বিপথে গুচি গৈছে সত্য ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে 3 নম্বৰ ঈশ্বৰে বাক্য দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে আমি আজি আলোচনা কৰি আছো জেৰেমিয়া 37 ভাৰ্স 17 জেৰেমিয়া 37 অধ্যায় 17 পদ Then King Zedekiah sent for him and had him brought to the palace, where he asked him privately, "Is there any word from the Lord?" Yes, Jeremiah replied, "You will be handed over to the king of Babylon." অলপ আগতে মই কৈ আহিছো যে আমাৰ কাৰণে সদায় ঈশ্বৰৰ বাক্য আছে যিসকলে ঈশ্বৰৰ বাক্য বিচাৰে ঈশ্বৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বাক্য সদায় ৰাখিছে ঈশ্বৰে সদায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বাক্য ৰাখিছে সেই কাৰণে আজি ঈশ্বৰক নজনা সকলৰ কাৰণে প্ৰথম বাক্য আছিলে যে মন ঘূৰাই আজি মোৰ ওচৰলৈ আহা দ্বিতীয় বাক্য তেওঁলোকৰ কাৰণে আছিলে যে তোমালোকে যিসকলে বেকস্লাইড হৈ গৈছা বিপথে গুচি গৈছা তোমালোকে মোৰ ওচৰলৈ আহা এতিয়া তৃতীয় বাক্য তেওঁলোকৰ কাৰণে যিসকল ঈশ্বৰৰ সন্তান Now this is the third message to them, the children of God. Those who say I am a servant of God, those who say I am a child of God, God want to say to you there is a message for you. अपनार करने आपके लिए एक क्या है वचन है आप कहते हैं ना मैं प्रभु का दास हूं आप कहते हो नहीं मैं तो प्रभु का जो एक संतान हूं लेकिन आज प्रभु आपसे कहना चाहता है आज ईश्वर अपना को बकाने বিচাৰিছে there is a message for you and the message is written in Romans chapter 12 verses 1 and 2 ৰোমিয়া 12 অধ্যায় 1 আৰু 2 পদত এই বাক্যটো আপোনালোকে সদায় মই কৈ থাকো যে আপোনালোকৰ নিজৰ জীৱন আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ হাতত সদায় দিয়ক আপোনাৰ নিজৰ জীৱনটো পবিত্ৰ আৰু গ্ৰহণীয় বলি স্বৰূপে ঈশ্বৰৰ হাতত সদায় দিয়ক
আজি ঈশ্বৰে আপোনাৰ জীৱনটো পবিত্ৰ গ্ৰহণীয় বলি স্বৰূপে ঈশ্বৰৰ হাতত খুধাই দিয়াটো বিচাৰিছে কাক বিচাৰিছে কাক এইটো বাক্য নতুন বছৰ দিব বিচাৰিছে যিসকলে আজি যীশুক চিনি পায় It's not enough that you know Christ এটো বহুত যথেষ্ট নহয় মই যীশুক জানো যদি আপুনি যীশুক জানে তেতিয়া হলে আপোনাৰ জীৱনটো যীশুৰ হাতত সমৰ্পণ কৰি দিয়ক একেবাৰে দি দিয়ক পবিত্ৰ আৰু ঈশ্বৰৰ গ্ৰহণীয় বলি স্বৰূপে এনে নহয় নাম মাত্ৰ নহয় খালি বাপ্তিজম লৈ থকাই নহয় খালি গিৰ্জা যোৱাই নহয় খালি ফাস্টিং লোৱাই নহয় আপোনাৰ জীৱনটো ঈশ্বৰক পবিত্ৰ আৰু গ্ৰহণীয় বলি স্বৰূপে তেওঁৰ হাতত খুধাই দিয়ক যাকোব 1:22 পদত কি কৈ আছে James chapter 1 and verse 22 Jacob 1:22 পদত কৈছে James said that he ought to be doer of the word of God not hearers only Jacob কৈ আছে ইয়াতে যে আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনোতা কেৱল নহয় পালন কৰোতা হ'বৰ কাৰণে do not merely listen to the word and so deceive yourselves do what it says খালি শুনোতা নহয় আজি আমি বহুত মানুহবিলাকে আমি বিশ্বাসীবিলাকে কালি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনো যদি আপুনি আজি যীশুক জনা 30 বছৰ হৈ গল 30 বছৰত আপুনি কিমান বাৰ ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিলে কিমান আপোনাক আজি আপুনি ৰিভাইভেল মিটিং এটেন্ড কৰিলে কিমান আপুনি আজি গস্পেল মিটিং এটেন্ড কৰিলে কিমান আপুনি আজি হিলিং মিটিং এটেন্ড কৰিলে দেওবৰীয়া গিৰ্জা মিটিং এটেন্ড কৰিলে কিন্তু খালি শুনি আছে বহুতে বাইবেলখন মুখস্থ জানে এটা পদ তেওঁলোকক আগত সুধিলে মুখস্থ ক'ব পাৰে কিন্তু বাইবেলে আমাক স্পষ্টৰূপে কৈছে जो बाइबल कहती है do not merely listen to the word ঈশ্বৰৰ বাক্যটো খালি শুনোতা নহয় খালি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিলো হৈ গল আজি মই গিৰ্জা শুনিলো হৈ গল পাষ্টৰে আজি বহুত ভাল বাক্য দিলে বাবা পাষ্টৰ আজি শিক্ষকে বহুত ভাল বাক্য দিলে বহুত ভাল no just you are hearer only শুনিলে আপুনি বাইবেলে কৈছে so deceive yourself নিজকে নিজে ঠগা do what it says কি কৈ আছে কি কৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্যই আজি কি ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে আজি মানুহবিলাকে নুশুনাৰ কাৰণ আৰু এটা কথা আছে কেলে যিজনে শিক্ষক হয় যিজনে প্ৰচাৰ কৰে তেওঁৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ বাক্যটো रिफ्लेक्ट न करे जो प्रचार करते हैं उनका जीवन में ही परमेश्वर का वचन रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो दूसरों जो अभी परमेश्वर वचन सुन रहा है वो लोग भी कहेगा ये तो ऐसा है तो हम उसका वचन कैसे सुने इसलिए सभी लोगों को Not only the hearers, जो सुन रहा है, not only the spectator, जो देख रहा है, जो बोल रहा है, जो परमेश्वर का वचन को दे रहा है, उनको भी प्रभु का वचन को सुनने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, उसको भी परमेश्वर का वचन को मान के चलना है, क्योंकि you are an example to others. आप दूसरों के लिए एक example हो. आप अगर दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो आपको जो लोग फॉलो कर रहा है इसलिए पौल ने बहुत ही मजबूती आवाज से बुलंद आवाज से कह रहा है इमिटेट मी as I imitate Jesus Christ मुझे मेरे जैसा बनो मुझे फॉलो करो जैसे मैंने यीशु को फॉलो किया है कितना उसका एक घमंड है वो घमंड ऐसा दुनिया का घमंड नहीं है उसको यीशु को मिला उसी का घमंड है तो यीशु पाले हेतु गौरवत কৈছে মই যেনেকে যিশুক অনুসৰণ কৰিলো তোমালোকে মোক তেনেকৈ অনুসৰণ কৰা आज आपको सुनने वाला नहीं बनना है आप परमेश्वर का वचन को इसमें कहा है तुम अपना शरीर को एक जीवित बलि स्वरूप तुम परमेश्वर को दो तो आपको उसको देना है बहुत सब भाई बहन कहते हैं मैं डिप्रेशन में हूं मैं बहुत चिंता में हूं बट व्हाई यू आर सो डिप्रेस्ड क्यों क्योंकि आप परमेश्वर को आप अभी तक जाना ही नहीं है जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है वो कभी डिप्रेशन में कभी चिंता में वो जाएगा ही नहीं किस लिए सच्चा परमेश्वर को जाना है परमेश्वर को जानने का मतलब जब आप समझ जाएंगे तब आप कभी भी चिंता करना कभी भी आप किसी बात के लिए घबराना आप होगा ही नहीं है परमेश्वर द लिविंग गॉड टू नो हिम इज नॉट ए थिंग ऑफ जोक्स कोई हंसी मजाक करने का चीज नहीं है मैं ईश्वरक जानू हाही कथा নহয় मैं ईश्वरक जानू आई नो हिम पर्सनली सचाके जानो कोन है हु इज गॉड
He is a creator of heaven and earth. যিজনে পৃথিৱী আৰু আকাশমণ্ডল সৃষ্টি কৰিলে, যিজনে মুখ সৃষ্টি কৰিলে, যিজনে পৃথিৱীত পঠালে। জেৰেমিয়াক কৈছিলে, I know you before you formed in your mother's womb. তোমাৰ মাৰ গৰ্ভত জন্ম হোৱাৰ আগতেই মই তোমাক জানো। সেইজন ঈশ্বৰ, তেওঁক মই চিনি পাওঁ। তেতিয়াহ'লে আপুনিতো সকলোকে ওখজনক চিনি পায়, তাতকৈ ওপৰত আৰু কোনো নাই। তেওঁক আপুনি যেতিয়া চিনি পায়, তেওঁ কৈছে ডু নট ৱাৰি, একোলৈ চিন্তা নকৰিবা, একো বস্তুলৈ তোমাৰ একো চিন্তাই হ'ব নালাগে। ডোণ্ট ৱাৰি, ডু নট ৱাৰি ফৰ এনিথিং। তেতিয়াহ'লে তাতে আমি সন্তুষ্ট হ'ব লাগে, তাতে আমি চিন্তাটো শেষ কৰি দিব লাগে যে মোৰ চিন্তা শেষ ইয়াতে। তেওঁ মোৰ ঈশ্বৰে কৈছে শেষ কি কয়, মই চিন্তা নকৰিবা। মই যেতিয়া নিউ ইয়াৰ দিনাখন মই কেইটামান হটলাইন দিছিলোঁ, যেতিয়া আমাৰ চিন্তা আহে তেতিয়া আমি কোনটো ৱৰ্ড মই কৈছিলোঁ, সেইটো হৈছে Isaiah 41 and verse 10. This is the hotline number that we can dial it and God will answer us. That Bible says, do not fear. ভয় নকৰিবা, for I am with you. To who is with us? The creator of heaven and earth. যিজনে আকাশমণ্ডলৰ পৃথিৱী বনাইছে, তেওঁ আমাৰ লগত আছে। Do not be dismayed. লজ্জিত নহবা, ভয়ভীত নহবা, for I am your God. মই তোমাৰ ঈশ্বৰ। I will strengthen you. মই তোমাক শক্তিশালী কৰিম and help you. সহায় কৰিম। I will uphold you with my righteous right hand. মই মোৰ ধাৰ্মিকতাৰ সোঁ হাতেৰে তুলি উঠাই ৰাখিম। Uphold you. Hey, praise the Lord. ঈশ্বৰে আজি আমাক জনাইছে। গতিকে what we have to do, we have to surrender our life. আমি নিজৰ জীৱনটো শুধাই দিব লাগে, আমি নিজৰ জীৱনটো ঈশ্বৰৰ ওচৰত শুধাই দিব লাগে। তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক কি কৰিব, আমাক তেওঁৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা চলাব। আমাৰ জীৱনটো ট্ৰান্সফৰ্মড হ'ব লাগে। একেই জীৱন যদি আপুনি চলাই আছে, যিটো জীৱন যীশুক জনাৰ আগতে আছিলে, এতিয়া সেই একেই জীৱনে আপুনি যদি চলি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, একেই আছে। আৰু তেনেকুৱা মানুহৰ ওপৰত বা তেনেকুৱা মানুহ, তেওঁৰ জীৱনটো পৰিৱৰ্তন নোহোৱা মানুহৰ জীৱনটো কি আছে তেওঁ ক'ব নোৱাৰে, তেওঁ তেনেকেই চলি থাকিব। কিন্তু আপুনি যেতিয়া যীশুক পায়, আপোনাৰ জীৱনটো পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে। বাইবেলত কৈছে those who are in Christ, কি কৈছে, they are new creation, নতুন সৃষ্টি। If you are a new creation, যদি আপুনি নতুন সৃষ্টি, তেতিয়াহ'লে আপুনি নতুন হৈ গ'ল। পুৰণা চব গ'ল, হেৰাই গ'ল, আঁতৰি গ'ল। দ্য ৰিজাল্ট অফ এ চাৰেণ্ডাৰ লাইফ, এটা নতুন জীৱন বা ট্ৰান্সফৰ্ম লাইফ, তাৰ 3টা পইণ্ট আছে, মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। এটা পৰিৱৰ্তন হোৱা জীৱনৰ, এটা নতুন হোৱা জীৱনৰ 3টা তাতে এটা ৰিজাল্ট আমি পাওঁ। নাম্বাৰ 1, দ্য পাৰ্চন উইল ন' দ্য উইল অফ গড। নতুন হোৱা মানুহজনে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাটো জানিব, পুৰণা মানুহজনে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাটো নাজানিব, কেলে তেওঁ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা এটা চলাই নাই। But the person who has already transformed, যাৰ জীৱনটো পৰিৱৰ্তন হ'ল, he will know the will of God. The will of God will be done and he will enjoy in the will of God. ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাটোত তেওঁ আনন্দ কৰিব। Thank you Lord. তুমি যে মোৰ জীৱনত এইটো কৰিলা, তুমি যে মোক এনেকৈ চলালা। পৌলে 3বাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, মোৰ কঁকালৰ বিষটো ভাল কৰি দিয়া, মোৰ কঁকালৰ বিষটো ভাল কৰি দিয়া প্ৰভু, মই বহুত কাম কৰিব লগা আছে। ঈশ্বৰে ক'লে my grace is sufficient for you. যেতিয়া ঈশ্বৰৰ আৱাজটো পালে, মই দুৰ্বল হ'লেতো মোৰ লগত ঈশ্বৰ আছে, তেতিয়াহ'লে পৌলে আৰু দুগুণ উৎসাহত কাম কৰিলে। Praise the Lord. আপুনি আৰু আজি আমি দুৰ্বল হয়, কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাটো গম পাব যে আপোনাৰ দুৰ্বলতাত ঈশ্বৰে আৰু অধিক কাম কৰে, যেতিয়া আপুনি দুৰ্বল হয়, আঁঠু কাঢ়ে, তেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাক অধিক শক্তিশালী কৰে, দেন আপুনি তেতিয়া অধিক আৰু আনন্দ কৰিব লাগে। ৰিজইচ ইন দ্য লৰ্ড। আই উইল সে ৰিজইচ। বাইবেলত কৈছে আনন্দ কৰা ঈশ্বৰত। আমি ঈশ্বৰৰ আনন্দ নকৰোঁ। খ্ৰীষ্টমাছত হিন্দী গানা গাই পিনে আমি আনন্দ কৰোঁ, নিউ ইয়েৰত আমি হিন্দী গান গাই আনন্দ কৰোঁ। নহয়, ইউ আৰ ৰিজইচিং ইন দ্য ৱৰ্ল্ডলি থিংছ। ৰিজইচ ইন দ্য লৰ্ড। কিমান প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিলোঁ আজি নতুন বছৰত, কিমান মই আজি ঈশ্বৰৰ নামত গীত গাব পাৰিলোঁ, কিমান আজি মই ঈশ্বৰৰ নামত মই কাম কৰিব পাৰিলোঁ। সেইটো হৈছে ঈশ্বৰৰ ট্ৰান্সফৰ্ম লাইফ। যিমান আমি পুৰণা স্বভাৱবিলাকত আমি লিপ্ত হ'ম, আমাৰ জীৱনটো সিমান পুৰণাই থাকিব। কিন্তু আমি নতুন, মই আজি ডাঠি ক'ব পাৰোঁ, মই হিন্দী ফিল্মৰ গান নুশুনোৱেই, কেতিয়াও কোনোদিনাই নুশুনো, যেতিয়া এবাৰ যীশুক জানিছোঁ।
কিয় মই হেবিলাক শুনিবৰ কাৰণে মোৰ কাণ নাই মোৰ কাণ আছে যিশুৰ গান শুনিবৰ কাৰণে যিশুৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে মোৰ মুখ হৈছে ঈশ্বৰৰ worship কৰিবৰ কাৰণে মোৰ মুখ হৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্য ক'বৰ কাৰণে মোৰ মুখ হৈছে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে কিয় পৃথিৱীৰ মানুহে জ্ঞান বুদ্ধি দি লিখা যিবিলাক আমি লেতেৰা যিবিলাক আমি ওৱৰ্ড বিলাক আমি যেতিয়া তাক ভালকে চাই দিও ওৱৰ্ড বিলাক বেয়া কিয় কাম হয় আমি ট্ৰান্সফৰ্ম লাইফত আছো পৰিৱৰ্তন জীৱনত আছো তেতিয়া পৰিৱৰ্তিত জীৱনটো আমি পুৰণা জীৱন কিয় পৰিৱৰ্তিত আমাৰ লাইফ আমাৰ সকলো বস্তু পৰিৱৰ্তন হৈছে তেনেহলে পুৰণা জীৱনটো কিয় দ্যাটস হোৱাই Zedekiah asked Jeremiah is there any word for me মোৰ কাৰণে কিবা বাক্য আছে নে জেৰেমিয়াই ক'লে yes আছে কৈছে আছে তুমি বিচাৰিছা জানিবৰ কাৰণে মই আছে মই কৈছো but remember one thing Zedekiah King Zedekiah কেতিয়া তেওঁক বিচাৰিছে ঈশ্বৰৰ বাক্য জেৰেমিয়াক জেলত বান্ধি থৈছে ইমান দুখ পাইছে মই বাক্যটো পঢ়ি মোৰ বহুত দুখ লাগিলে ইমান দুখ পাইছে জেৰেমিয়াই যেতিয়া জেৰেমিয়াই জেলত আছে ঘুৰি আহি পিনে যেতিয়া ৰজাই মাতি আনিলে তেতিয়া ৰজা কৈছে মোক তালৈ আৰু পঠাই নিদিবা বহুত দুখ লাগে হেতু জেলত মোক পঠাই নিদিবা নহলে তাত মই মৰি যাম কিমান দুখত কৈছে তাৰ মানে কিমান শাস্তি পাই আছে ঈশ্বৰৰ মানুহ প্ৰফেট কিহৰ কাৰণে ইমান শাস্তি পাইছে এটা কথাই কৈছিলে তুমি ইজিপ্তৰ ৰজাৰ লগত হ্যান্ডশেক নকৰিবা তেওঁৰ লগত মিতিৰালি নকৰিবা আৰু বেবিলনৰ ৰজাৰ এগেইনষ্ট নকৰিবা তেওঁৰ লগত লগ লাগি কিন্তু জিদিকিয়া ৰজাই ঈশ্বৰৰ প্ৰফেচিটো লৈ ঈশ্বৰৰ বাক্য লৈ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা লৈ কাণ নিদিলে আৰু জেৰেমিয়াক বন্দী বনাই থলে আৰু এইটো ইজিপ্তৰ ৰজাৰ লগত হাত মিলালে ঈশ্বৰে হেকানে ক'লে তথাপি আকৌ সুধিছে তথাপিও মোৰ কাৰণে প্ৰফেসি আছে নেকি আজি বহুত মানুহবিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত কিবা দেখিলে নেকি কেতিয়াবা ক'বলৈ মন যায় কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰো বহু কথা আপুনি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাটো মানিছেনে আপুনি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা যদি মানিছে তেতিয়ালে ঈশ্বৰে আপোনাক নিশ্চয় ক'ব আপুনি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাটো মনাই নাই ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাটো পালনে কৰা নাই যেনেকৈ সিদিকিয়া ৰজা ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাটো পালনে কৰা নাই তুমি ইজিপ্তৰ ৰজাৰ লগত হাত নিমিলাবা ঈশ্বৰে ডাইৰেক্টলি মানা কৰিছে কিন্তু তেওঁ ইজিপ্তৰ ৰজাৰ লগত হাত মিলাই বেবিলনৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে গৈ আছে বেবিলনৰ ৰজাৰ লগত আকৌ ঈশ্বৰকে সুধি আছে মোৰ কাৰণে কিবা বাক্য আছে নে হেইকাৰণে ঈশ্বৰে ক'লে আছে যে তোমাক বেবিলনৰ ৰজাই ধৰি লৈ যাব আজি মই হেতু ক'ব কাৰণে বিচাৰিছো যি সকলে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা নামানি পিনে প্ৰফেসি ভিজনৰ পিছত ফুৰে তেওঁৰ কাৰণে ঈশ্বৰে কও হয় তোমাৰ কাৰণে বাক্য আছে যদি তুমি ঈশ্বৰৰ লগত নাথাকা শয়তানে তোমাক ধৰি লৈ যাব সঁচা কথা ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা নামানিলে শয়তানে ধৰি লৈ যাব ভিজন প্ৰফেসি তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ইফেক্টিভ হ'ব যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ লগত থাকিব yes মই ঈশ্বৰৰ লগত আছো সৌলে ঈশ্বৰৰ বাক্য নামানিছিলে লাষ্টত ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পুৰোহিতে কৰিব লগা কামটো তেওঁ নিজেই কৰি পেলালে তাৰ মানে পুৰোহিতে স্যাক্ৰিফাইস কৰিব লাগে হি নিজেই স্যাক্ৰিফাইস কৰি দিলে আৰু যেতিয়া সময় লাহি পালে হে কি কৰিলা তুমি এই আপুনি আহিবলৈ দেৰি হ'ব বুলি ভাবি এফালে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে সবে ৰেডি হৈ আছে সেইকাৰণে ময়ে স্যাক্ৰিফাইস কৰি দিলো তুমি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলা যেটো কাম পুৰোহিতৰ হয় তুমি পুৰোহিতৰ এৰি দিব লাগিছিল তুমি কিয় স্যাক্ৰিফাইস কৰিলা আপুনি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাটো ডিসঅবে কৰিব নামানিব আৰু ঈশ্বৰক ক'ব প্ৰভু মোৰ কাৰণে ৰেভেলেশন দিয়া প্ৰভু মোৰ কাৰণে প্ৰফেসি দিয়া মোৰ কাৰণে ভিজন দিয়া No, ঈশ্বৰে কেতিয়াও নিদিয়ে মই না মানো প্ৰথমে আপুনি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাটো পালন কৰক ঈশ্বৰে আপোনাক সকলো দিব হেই কাৰণে ঈশ্বৰে কৈছে মই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনালৈ কাণ পাতি থাকো আৰু মোৰ চকু তেওঁলোকৰ ওপৰত থাকে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড বাইবেল সেজ ঈশ্বৰে কৈ আছে হেই কাৰণে আপুনি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাটো পালন কৰিব ঈশ্বৰে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাটো শুনিব ঈশ্বৰে আপোনাৰ ভৰিটোলৈ চাব আৰু আপোনাক কিবা কথা ক'ব থাকিলে তেতিয়া দৰ্শক বা প্ৰফেট বা যিবিলাক এটো ভিজন দেখা মানুহ আছে তেওঁৰ যোগেদি আপোনালৈ বাক্যটো আহিব যে ঈশ্বৰে তোমাক এনেকে নহয় এনেকে চলিবৰ কাৰণে কৈছে হেই হৈছে ঈশ্বৰৰ পৰা অহা বাক্য তিনিটা কথা আজি এই বাক্যৰ যোগেদি আমি শুনিবলৈ পালো ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰক সকলোৱে আমি থিয়ম shall we stand together and let us pray আমি একেলগে মিলি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰো আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত বিচাৰিম আজি প্ৰভু এইখিনি সময়ত আমি যেন প্ৰভু তোমাৰ অনুগ্ৰহত থাকিব পাৰিম আমি যেন ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা আমি চলিব পাৰিম আৰু যেন ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি মানি চলিব পাৰিম মোক তোমাক লাগে সকলো সময় পৰীক্ষাটো
মোৰ লগত থাকা সুখত দুখতে তুমি উপস্থিত থকাত নাই মোৰ ভয় দুৰ্গতি চকুলোনে মানুহ ক'ত মৃত্যুৰ হ'ল বা ক'ত মৈদামৰ জয় তুমি মোৰ লগত থকাত জয় সময় হালেলুয়া 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 প্ৰভু ধন্যবাদ হালেলুয়া প্ৰভু ধন্যবাদ মহিমা প্ৰশংসা স্তুতি প্ৰভু ধন্যবাদ দিছোঁ তুমি আজি সুন্দৰ আশীৰ্বাদ কৰিছা কাৰণে প্ৰভু হালেলুয়া 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 ৰাবা থ্যাংক ইউ হোলি স্পিৰিট হালেলুয়া প্ৰভু ধন্যবাদ 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 দিছোঁ প্ৰভু তুমি আজি মৰম কৰাৰ কাৰণে সুন্দৰ প্ৰভু তোমাৰ পবিত্ৰ বাক্য তোমাৰ নিশ্চাকিত বাক্য প্ৰভু আজি এই আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই বাক্যৰ পৰা অধিকতৰ জ্ঞান পাবৰ কাৰণে তুমি দিলা হয় প্ৰভু তোমাৰ বাক্যত যে আজি প্ৰভু চলিব পাৰিম আৰু এই বাক্য যে মানিব পাৰিম প্ৰভু তুমি তেনে অনুগ্ৰহ কৰা পিতা ঈশ্বৰ প্ৰভু মই যিমান আজি তোমাৰ সন্তানসকল উপস্থিত আছে যিসকল আজি ফেচবুক লাইভৰ যোগেদি আৰু ইউটিউবৰ যোগেদি আমাৰ লগত আছে প্ৰভু পিতা মই তেওঁলোকৰ কাৰণে प्रार्थना करो प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ दुआ करता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए जो प्रभु यहाँ आज उपस्थित है जो प्रभु इस समय जो हमारे साथ फेसबुक लाइव के द्वारा यूट्यूब लाइव के द्वारा जुड़े हैं प्रभु हर एक के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु पिता आज जो वचन आपने कहा प्रभु आप मुझे मेरे द्वारा इस वचन प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु उनका जीवन में काम आए और ये वचन मान के चल सके प्रभु आप ऐसे आशीष कीजिए मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका अनुग्रह और आशीष उन लोगों का जीवन में आए बहुतायत से आए मैं ऐसे आपसे विनती करता हूँ पिता मैं निवेदन करता हूँ प्रभु इस समय आप हर एक भाई बहन का गलतियों अपराधों को आपका पवित्र लहू के द्वारा आप धो दे जो इस समय रिपेंट होना चाहते हैं जो इस समय बैकस्लाइडेड है फिर से आपका पास आना चाहता है जो प्रभु जो वचन जो इस समय नया जो व्यक्ति सुना है प्रभु जो कभी भी आपका वचन नहीं सुने हैं वो अगर इस वचन को सुने हैं प्रभु उनको भी आपका पास आने के लिए आप उसको न्योता दीजिए आप उसको समय दीजिए पिता जो भाई बहन प्रभु आपको जानते हैं और कहते हैं मैं आपका दास आपका दासी आपका जो आपका संतान हो उन लोगों का भी प्रभु आप मौका दीजिए ताकि वो लोग भी सच्चाई से अपना जीवन को प्रभु आपका हाथ में समर्पण कर सके मैं विनती करता हूँ पिता हर एक भाई बहन को इस समय में आपका पास लाके आया हो इस नया साल में प्रभु ये जो नया आज पहला संडे है प्रभु आज ये दिन हर एक व्यक्ति का जीवन में आप काम कीजिए हर एक व्यक्ति का जीवन में इस वचन के द्वारा आप काम कीजिए आशीष आने दे जितना भी दुष्ट आत्मा इस समय काम कर रहा है यीशु मसीह का नाम से मैं हर एक शैतानी शक्तियों को बांध रहा हूँ यीशु मसीह का नाम से हर एक शैतानी शक्तियों को मैं बांध रहा हूँ जो उनका विश्वास में कमजोर लाने वाला उनका प्रॉब्लम लाने वाला उनको दुख देने वाला शैतान को मैं यीशु मसीह का नाम से हुक्म देता हूँ अभी इसी वक्त छोड़ दे हर एक भाई हर एक बहन का जीवन को जो छोड़ के चला जा यीशु का नाम से जो अविश्वास में जो भी अभी लोग हैं जो प्रभु को जानने के लिए नहीं दे रहे उनका जीवन में से तू निकाला जो भाई बैकस्लाइड हो जो बहन बैकस्लाइड हो चुका है उनका जीवन में इस समय मैं उनका काम करने वाला शैतान को निकल आने का हुक्म देता हूँ तू चले जा यीशु मसीह का नाम से जो परमेश्वर का संतान है उनका जीवन में से निकल आने का हुक्म देता हूँ शैतान तू निकल यीशु मसीह का नाम से ओ राबा शाका बाबा 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 हालेलुया हालेलुया राबा 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 हालेलुया 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 प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद 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 देता हूँ काम कीजिए पिता आपका काम आपका अनुग्रह आपका आशीष उनका जीवन में आने दीजिए इस समय जो भाई और बहन जो मुझे फेसबुक लाइव के द्वारा देख रहे हैं इस समय जो यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा आप अपने हाथों को इस समय अपना टीवी का स्क्रीन की तरफ नहीं तो आप जो मोबाइल देख रहे हैं उनका तरफ आपका हाथ को स्ट्रेच कीजिए
इस समय प्रभु आपका जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपका जीवन में काम करना चाहता है। ये जो इस समय पवित्र आत्मा आपका जीवन में आपको आशीष देना चाहता है, आशीष लाना चाहता है, आपको नया करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। शिखालाबा, इस समय पवित्र आत्मा इंपार्ट हो रहा है, पवित्र आत्मा आपका जीवन में भेज रहा है। प्रभु पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। हर एक को जो इस समय विश्वास के साथ मेरे से जुड़े हैं, हर एक को पवित्र आत्मा छू रहा है। हालेलुया। हर एक डिप्रेशन चले जा रहा है, हर एक डिप्रेशन भाग रहा है इस समय यीशु मसीह के नाम से। जो विश्वास में कमजोर है, यीशु आपको आशीष कर रहे हैं आपको विश्वास में बढ़ने के लिए। हालेलुया। जो इस समय जो बहुत ही दुख में है, जो पीड़ा में है, प्रभु आपसे दुख और जो पीड़ा छीन के लेके जा रहा है, आपको प्रभु का शांति और आशीष दे रहा है। जो बीमार है इस समय बीमार भाग रहा है यीशु मसीह का नाम से। शिखा लाबा राबा शाका बाबा 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 बाबा। हालेलुया। इस समय प्रभु आपको पूरा साल अच्छे जाने के लिए आशीष कर रहा है। ये संदेश जितने भी लोग जो इस मैसेज को देखा, जितने भी लोग इस मैसेज को सुना, प्रभु इस समय आपका जीवन में काम कर रहा है, प्रभु आपका जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। आपका घर में जो भी अशांति है, शैतान इस समय उस अशांति को ले, जो आपका जीवन में जो अशांति दे रहा है, प्रभु उस अशांति को दूर करते हुए आपको आशीष दे रहा है, शांति से भर रहा है, शांति से भर रहा है। आपका बिजनेस का ऊपर, आपका जो भी जॉब है उनका ऊपर, आपका जो भी प्रोफेशन है उनका ऊपर प्रभु आशीष कर रहा है। रेशाबा राबा शिखा लाबा राबा शाका शिबा बाबा 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 होता राबा। पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम कर रहा है। रिसीव द मिरेकल, रिसीव द मिरेकल, receive the miracle, receive the miracle and dedicate your life, dedicate your life। आपका जीवन को आप डेडिकेट कीजिए, आप परमेश्वर का हाथ में सौंप दीजिए, सरेंडर कीजिए। प्रभु आपको चलाना चाहता है, प्रभु आपको चलाना चाहता है, प्रभु आपको नया बनाना चाहता है, प्रभु आपको नया बनाना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है उनका ग्लोरी के लिए। हालेलुया। ये प्रभु आपका जीवन में काम कर रहा है, मिरेकल हो रहा है, मिरेकल हो रहा है। आप प्रभु को बोलिए, यस लॉर्ड, जो मिरेकल, जो चमत्कार आपने मेरे जीवन में किया है, मैं उसको छुपाऊंगा नहीं, ये मैं दुनिया को बताऊंगा। आप परमेश्वर को बोलिए, आप मेरा जीवन में जो भी दिया है आशीष, मैं दुनिया को बताऊंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए है। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपको कह रहा है, आप जाइए, आप हर एक के लिए, हर एक का पास आप जाइए, आप एक प्रकाश बनिए, आप एक ज्योति बनिए। जो अंधकार में है उन लोगों को जो ज्योति देने के लिए, उन लोगों को प्रकाश देने के लिए आप एक ज्योति बनिए। हालेलुया। आपका विटनेस अनेक व्यक्ति को प्रकाशित करेगा, आपका जो शक्ति गवाही अनेक व्यक्ति का जो ज्योतिमय करेगा। आप प्रभु आपको आशीष किया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने विनतियों को सुना, आपने आशीष किया, आपने प्रभु आशीष जो सुबह आपने सुंदर आशीष करके हमें जो वचन को आपने सुनने दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हर एक व्यक्ति को, हर एक भाई को, हर एक बहन को मैं आपका पवित्र हाथ में सौंपता हूं। प्रभु आपका अनुग्रह, आपका आशीष, आपका प्यार हमेशा उन लोगों पर बने रहे। प्रभु ये भाई बहन सबको मैं आपका पवित्र हाथ में सौंपते हुए बेनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इस वचन के द्वारा, और जो फेसबुक के द्वारा मुझे देख रहे हैं, आप हमेशा सुबह 9:30 बजे आपको संडे आपको फेसबुक के द्वारा माध्यम के द्वारा प्रभु का वचन मिलेगा। और जो यूट्यूब आप लोग इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, आप लोग अमेजिंग ग्रेस ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु ने जो भी मुझे वचन देते हैं, मैं इस चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप भी उस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रभु आप लोग को आशीष करेगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।